एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो जिसमें कि हम घटना चक्र आई दृष्टि को कवर कर रहे हैं थ्रू दी MCQ पार्ट। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ये दोनों हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एंड टुडेज़ वीडियो हम साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी का पोर्शन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द साइंस एंड टेक पोर्शन एंड देन आई विल स्टार्ट द economy wala part. Okay, so without wasting time, let us start our today's session. What is Bharat Gen LLM known for? So Bharat Gen is a large language model. It is India's first multimodal large language model. So B is the correct answer. Now, which institution executed the Bharat Gen LLM? So it is developed by TIH Foundation at the IIT Bombay. So mainly it is developed by IIT Bombay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज एरावत्स रैंक इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट ऑफ जून 2025? सो द रैंक वाज 152। इफ़ मैं बात करूं अबाउट द फर्स्ट रैंक, सो द नेम ऑफ द कंप्यूटर इज़ फुगाकू। एंड ये कौन सी कंट्री का है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फुगाकू इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। Next is who became the second Indian astronaut to travel to the space in June 2025? So the name is Shubhanshu Shukla. First person to travel in the space is Rakesh Sharma. And इन्होंने किनके टेन्योर पे ट्रैवल किया था? So he traveled during the tenure of इंदिरा गांधी. Okay. Now इंदिरा गांधी से emergency is related. ठीक है, emergency which is also known as संविधान हत्या दिवस. So when is संविधान हत्या दिवस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड एक्सियोम 4 मिशन टू द ISS? सो एक्सियोम मिशन वो सेम मिशन है जिसमें इंडिया के सेकंड एस्ट्रोनॉट गए हैं स्पेस पे, दैट इज शुभांशु शुक्ला। ठीक है, सो ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन मिशन है जिसके थ्रू शुभांशु शुक्ला वेंट टू स्पेस। नाउ 3 मोर कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट गए हैं। लेट अस सी आपने कितने डेप्थ में पढ़ा करंट अफेयर्स को। एक तो पोलैंड के हैं, ठीक है, एंड 2 और किस कंट्री के हैं, एक हंगरी का है, एक और मैं बता देता हूँ। एंड नेक्स्ट जो थर्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज वाई डिड इसरोज PSLV दैट इज पोलर लॉन्च व्हीकल मिशन फेल? बिकॉज ऑफ इट्स स्नैग इन द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जाते जाते एक एरर हुआ था जिसके वजह से ये मिशन फेल हुआ था। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आपको बताना है कि PSLV 4 स्टेज रॉकेट लॉन्चर है। फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड, अनदर वन इज लिक्विड, देन देयर इज सॉलिड एंड देन देयर इज लिक्विड। सो जो तीसरा स्टेज है ना, सॉलिड फेज, वहाँ पे एरर की वजह से ये फ्लाइट फेल हुई है। नेक्स्ट इज वेयर वॉज DRDO स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म ट्रायल्स कंक्लूडेड? ये कंक्लूड हुए थे हमारे शिवपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द हंसा 3 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट? सो इस वॉज डेवलप्ड बाई CSIR NAL बेंगलुरु। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इंजन पावर्स द हंसा 3 NG? नाउ दिस इज अ रोटैक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन, सो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज विच यूनिवर्सिटी क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शीप ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दिस फर्स्ट जीन एडिटेड शीप वॉज डेवलप्ड बाई SCOOAST श्रीनगर। नाउ व्हाट जीन वॉज मॉडिफाइड यूजिंग द CRISPR-Cas9 इन द शीप? सो द myostatin gene was modified. This CRISPR-Cas9, this is a genome editing technique. Okay, and इसके लिए नोबल प्राइज़ भी मिला है, नोबल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये किनको मिला था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज व्हाट रेडार डज द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज बायोमास मिशन सैटेलाइट यूज? सो इट यूजेज अ P-band SAR. Next is the biomass mission of the European Space Agency obviously covers the forest zone from the 75° north to 56° south. Second one is the correct answer. What is the name of the thermophysical experiment aboard Chandrayaan 3? So it is the CHAST instrument.
इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टेम्परेचर डिफरेंस रिकॉर्डेड बाय द चेस्ट विद इन द 8 सेंटीमीटर डेप्थ। सो द टेम्परेचर दैट वाज रिकॉर्डेड वाज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। What is the maximum range of the god of long range glide bomb? So the range was 100 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये गौरव इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज गौरव, इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, एंड किसने डेवलप किया ये इंपॉर्टेंट है। नाउ विच DRDO लैब डेवलप्ड द गौरव ग्लाइड बॉम्ब। सो इट वाज डेवलप्ड बाय RCI हैदराबाद। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि DRDO हैदराबाद का जो ऑफिस है दैट डेवलप दिस गौरव ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, एंड रेंज इसकी 100 किलोमीटर्स है। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ इंडियाज लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन Mark 2A? सो दिस इज द रेंज इज 30 किलोवाट। Which AI initiative was launched to enhance the multilingual parliamentary operations? So this is संसद भाषिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सो आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज what is India's AI dataset and development hub launched under the India AI mission? So the name is AI Kosha, ठीक है। It is a developmental hub database that is launched under the India AI mission, AI Kosh। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ द सेकेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। शुभांशु शुक्ला, हमने डिस्कस कर लिया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्राइमरी पेलोड अलोंगसाइड लूनर ट्रेल बेस्ड सैटेलाइट इन फेब 2025। सो IM-2 लैंडर के साथ ये सैटेलाइट भेजा गया था। विच यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटेलाइट रिटायर्ड इन मार्च 2025 आफ्टर मैपिंग स्टार्स फॉर ओवर अ डिकेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक डिकेड के बाद दिस सैटेलाइट हैज रिटायर्ड, सो द नेम इज गया, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि गया इज अ सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट आ गया हमारा विच इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप, स्कूसैट श्रीनगर। विच वैक्सीन रिसीव्ड अप्रूवल फॉर लंपी स्किन डिजीज इन फेब 2025। सो दिस इज बायोलुम्पेविक्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ऐसे पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपके। नेक्स्ट इज विच मिशन इज इंडियाज फिफ्थ इन द चंद्रयान सीरीज अप्रूव्ड इन मार्च 2025। सो दिस इज द ल्यूपेक्स मिशन। इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो, एंड इसरो के साथ इसमें जापानीज स्पेस एजेंसी का भी रोल होने वाला है, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विथ इसरो फॉर द ल्यूपेक्स मिशन। अब बता दिया मैंने अभी ऑलरेडी, जापान की स्पेस एजेंसी, ठीक है। ESA तो समझ गए होगे आप, नासा आपको पता है USA है, एंड रॉसकॉस्मोस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली एक कंट्री है विच हैज़ लॉन्च इट्स ओन स्पेस एजेंसी, दैट इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने रिसेंटली अभी खुद की स्पेस एजेंसी लॉन्च की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। What is the primary scientific objective of Chandrayaan 5, that is LUPEX mission? So exploring the lunar volatiles near the South Pole, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथर्न साइड ऑफ द मून। इसके अलावा जिस पॉइंट पे लैंड हुआ है हमारा क्या कहते हैं सैटेलाइट, जहाँ पे लैंड हुई है, रोवर जहाँ पे लैंड हुआ है, दिस इज़ नोन एज द शिव शक्ति पॉइंट। एंड इसके रिगार्डिंग जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, जिस दिन ये लैंड हुआ था, नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड। अभी नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज नासाज पंच मिशन एम टू स्टडी। सो दिस स्टडीज द ट्रांजिशन फ्रॉम सोलर कोरोना टू सोलर विंड। सो दो बातें याद रखना, पंच मिशन इज लॉन्च्ड बाय नासा एंड इट इज रिलेटेड टू द स्टडिंग ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। Next is FAIR-X satellite launched alongside the Punch mission will observe, so it is related to solar flare in high frequency, ठीक है, sorry, it is related to near infrared and optical cosmic light, ठीक है। Punch mission जो है this will observe the sun's outer layer, whereas FAIR-X will watch for the cosmic lights। next question देखते हैं, which is unique about the Nadi Tarangini device? Now, it is the first Ayurvedic AI-powered diagnostic device which is approved by CDSCO. Nadi Tarangini याद रखना important है, very very important है this is. Next is where was the 10-ton vertical propellant mixture developed by the ISRO? So it was developed by the
SDSC with CMTI Bangalore. Which portal gives researcher access to India's 10,000 genome samples? ऑप्शंस आपके सामने हैं. करेक्ट आंसर है हमारा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेट. Now, what is special about the Shakti Sat mission? It is first student built Mars rover, all girls lunar satellite project involving 108 countries, first Indian robotic talking text India's moon based simulation. So this is all girls lunar satellite project involving 108 countries. What milestone was achieved by ISRO's SpaceX mission in January 2025? So the achievement was deep space docking of 2 space aircraft. तो SpaceX mission ISRO का है, ये याद रखना सबसे ज़्यादा, तो ये important है. Next is what technology does the PM-4 utilize for orbital experiments? So this is repurposed PS4 stage of PSLV. ठीक है, repurposed PS4 स्टेज ऑफ दी. अभी मैंने बताया ना PSLV के 4 स्टेजेस होते हैं, तो उसी में जो 4th स्टेज होता है हमारा, उसको यूटिलाइज करके पोएम एक ऑर्बिट होती है, वहाँ पे एक्शन का काम है. नेक्स्ट इज विच 2 स्टार्टअप्स आर कोलैबोरेटिंग ऑन अ स्पेस डेब्रिस लेजर रिमूवल स्टडी. सो इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय ऑर्बिटल लेजर है InSpaceCity. What does nano bubble technology primarily aims to achieve? So it aims to treat wastewater and support the aquatic systems. Next is what is the typical size range of the nano bubbles? So the size is 50 to 200 nm. Where was India's first diabetes biobank established? It was established in Chennai. What was the objective of the European Space Agency's Proba 3 mission launched by ISRO? So Proba 3 mission का क्या एम था? It was there to demonstrate formation flying to study sun's corona. ठीक है. So जो Proba space mission है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, that is related to studying sun. अभी हमने पंच मिशन देखा था, that was by NASA which was related to sun. इंडिया की मैं बात करूँ तो आदित्य L1 मिशन है, that is of ISRO, and it is also there to study the outermost layer of the sun, that is sun's corona. Next is where did ISRO's PSLV C-37 upper stage re-enter the earth atmosphere? So ये enter किया था नॉर्थ अटलांटिक ओशन में. Next is who conducted the Bharat National Cyber Security Exercise in 2024? It was conducted by NSCS and Rashtriya Raksha University. Next is what initiative was launched alongside the Bharat NCX 2024 for simulation training? So NCR1, that is National Cyber Range 1 initiative was launched. Next is Operation Dronagiri is a pilot initiative under which national policy? So this is a initiative under the National Geospatial Policy. अब ये National Geospatial Policy which ministry had made it? This you will tell me in the comment section. ये आप मुझे comment section में बताएंगे. Next is what program links top tier and emerging universities for research and development? So this is the PAIR program. Next is what unique capability does India's V-SHORAD system possesses? So India का जो V-SHORAD system है, it is hit to kill precision targeting. ठीक है. Next is which diagnostic test was approved by WHO in October 2024 for mpox detection? So this is an Alinity MPXV assay. ठीक है. So ऐसे दे सकते हैं वो कि Alinity which has been recently seen in news is related to what? So ये mpox को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट है. Now what record was set by the Polaris Dawn mission? So ये Polaris Dawn mission was the first spacewalk by the non-professional astronaut. ठीक है. Who conducted this Polaris Dawn mission? This you will tell me in the comment section. Okay. Next है who developed the first WHO approved mpox vaccine MVA-BN? So it was developed by Bavarian Nordic AS. ठीक है. Important है ये, so इसको ध्यान रखना. Next है हमारा what is the name of India's tetravalent dengue vaccine undergoing phase 3 trials? So it is Dengue and it is developed by India. So ये याद रखना, important question है. Next है हमारा
Where is India's first diabetes biobank located? So Chennai में located है ये. Which upcoming ISRO's mission aims to return lunar samples to the Earth? So this is Chandrayaan 4 mission. UPEX mission जो है, this is also known as Chandrayaan 5 mission. ठीक है, and it is in collaboration with the Japanese space agency, that is JAXA. What is the scheduled launch opportunity window for the India's Venus orbiter mission? So the launch opportunity is in March 2028. Which program is being extended to build the Bharatiya Antariksha Station? So Gaganyaan program is there. What is the payload capacity of the upcoming next generation launch vehicle? So the payload capacity is 30 tons. Important है, पूछा जा सकता है ये. Next is, which hybrid rocket was launched with a student outreach component in August 2024? So this is Rumi 1 rocket. What is the name of the indigenous light tank tested by DRDO? So the name of the tank is Zorawar. What is the total outlay approved for the Unified Bioride scheme? So Unified Bioride scheme को 9,197 crore rupees allocate हुए हैं. What is BSNL Quantum 5G FWA best known for? So this is a seamless 5G fixed wireless access. Which US based company has partnered with BSNL for D2D satellite connectivity? So this is Viasat, company of the United States of America. What is the Rudrastra UAV unique operational feature? So this is an hybrid VTOL with airburst warhead. So Rudrastra is a type of drone. ये आपके लिए सबसे ज़्यादा important question है, ये question आ सकता है एग्जाम में. Which startup launched the SCOT, the world's first commercial space surveillance satellite? So this has been launched by Digantra. What makes Pixel's Firefly satellite constellation special? So this is the hyperspectral imaging that makes this satellite special. What milestone did NASA's Parker Solar Probe achieved in December 2024? As the name suggests, solar probe तो वो सन से रिलेटेड होगा. सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सन से रिलेटेड नहीं है, तो क्लोजेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू द सन ये अचीव किया है पार्कर सोलर प्रोब ने. विच एस्टेरॉइड is China's Tianwen-2 mission targeting for sample collection? So this is the Kamo-Ileva asteroid. What is the unique feature of India's Bhargavastra system? So this is a micro mission counter drone system. C is the correct answer. What milestone did India achieved in the VLSR SAM trials in Chandipur? So this was a successful vertical launch surface to air missile test. Next is, what is Bharat Data Sagar designed to support? So it is designed to support multimodal generative AI models. Next is, what is the goal of India's ITESQ strategy released in April 2025? So quantum technology collaboration is the thing that was achieved. Next is, what initiative was launched alongside Sagar Bhavan and Polar Bhavan at NCPOR? So Science on Sphere, SOS. This was done. What was the theme of All India's Forensic Science Summit of 2025? So the theme was Role of Forensic Sciences in New Criminal Laws and Combating Terrorism. This was achieved. Next है हमारा, which Indian company launched the 25 qubit quantum computer QPI AI Indus? So it was launched by QPI AI. ठीक है. Next है हमारा, India's first 3 nm chip design center were inaugurated in which 2 cities? Important question है. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नोएडा एंड बेंगलुरु. DRR धान 100 कमला राइस मैच्योर्स इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? तो 130 डेज. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कमला इज अ वैरायटी ऑफ राइस. क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कमला, the word kamla recently seen in news is related to what? So it is a new variety of rice. What soil condition does Pusa DST Rice 1 enhances in yield? So saline and alkaline soil में ये Pusa DST Rice 1 act करता है. What rocket launch student competition is scheduled in Kushinagar? So CANSAT and Model Rocketry India is scheduled in Kushinagar. What is India's indigenous air defense system tested during the Operation Sindoor? This is
आकाश तीर। What is the name of India's first anti-pesticide bodysuit? Important question है. This is किसान कवच. Next है हमारा, what data set released by IIT Madras contain high resolution 3D fetal brain images? So this is Dharani. Next is India's first zoo-based wildlife biobank is situated in Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling. And it is very very important question. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. Next is, which institution developed the Matsya 6000 deep ocean submersible? So this was developed by National Institute of Ocean Technology. Where will India's first quantum computing village be established? So it is going to be established in Amravati. What does the IRIS chip developed by IIT Madras and ISRO stands for? So this stands for Indigenous RISCV controller for space application. Next is, which drone system integrates input from aerial and ground sensors? So this is the Sanjay battlefield surveillance system. Next is, which air-to-air missile was successfully tested from Tejas aircraft in March 2025? This is the Astra missile that was tested. What makes INS Varsha strategically significant? Now this is India's base for nuclear powered submarine. Very very important, ये याद रखना, INS Varsha is related to the nuclear powered submarine. What is the name of India's first automated biomedical waste treatment plant? So Shri Janam is the name. Which organization launched the Biosarthi Mentorship Initiative? It was launched by the Departmental of Biotechnology. What does the Garbh INI Drishti repository focus on? So it focuses on maternal and child health data. Which satellite project is aimed at enhancing Assam's border and socio-economic security? So the name is AssamSat. What's unique contribution about INS, that is Indian Navy, Arnala's construction? So Arnala is the constructed during the PPP model, that is public private model. Where was the Asia's largest Cherenkov telescope inaugurated? In Hanle, Ladakh. What is the name of the IIT Madras fetal brain imaging data set? So Dharani is the name. Which launch vehicle began assembly as the SDSC for India's first human rated flight? So the name is HLVM-3. What is the purpose of NASA's Pandora's mission? So the aim is investigating exoplanets and their atmospheres. Which satellite was undocked by ISRO in March 2025? This is the SpaceX exercise. What is INS Tamil classified as? It is a stealth guided missile frigate. Important question है, ध्यान रखना है इसको. Next is, what is the name of India's indigenous battlefield surveillance system flagged off in January 2025? The name is Sanjay. What missile system did DRDO successfully test in Feb 2025 for maritime welfare? This is NASM-SR. Next is, which chip launched by Microsoft in Feb uses topological qubits? So the name is Majorana 1. Which state received the highest DST allocation for quantum hubs? Largest money has been given to Uttar Pradesh. By which AI by Zomato handles up the 80% of customer queries? So the name is Nugget. Next is, what type of vessel is INS Arnala? So this is an anti-submarine shallow watercraft. Who built fast petrol vessels Amulya and Akshay? So this has been developed by Goa Shipyard. What is EVO 2 designed for? So EVO 2 is designed for the genomic research. What initiative aims to nurture biotech startups through mentorship? So this is Biosarthi program. Where was India's first geosciences museum inaugurated? It is inaugurated in Gwalior, and this is a very important question. What is the name of India's first indigenous surgical robotic system used in telesurgery? So the name is SSI Mantra 3. Which disease was officially eliminated as a public health problem in India by October? So this is trachoma. Trachoma is a bacterial disease. ये मैं पहले भी cover कर चुका हूँ videos में.
तो ये आपको पता ही होगा. What is the range of India's submarine launched K4 nuclear capable missile? So the range is 3500 kilometers. Next is, what missile did DRDO test in November 2024 with hypersonic capabilities over 1500 kilometers? So this is the long range hypersonic missile. From which submarine was the K4 missile successfully launched? So this was launched from INS Arighat. What missile was launched by DRDO validating operational parameters? Agni 4. This is an intercontinental ballistic missile. What is the name of India's first hyperloop test track location? So this is located in IIT Madras. What is the name of the world's first wooden satellite launched? So this is Lignosat. ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. नेक्स्ट इज, which Google quantum chip performed a computation faster than any supercomputer in December 2024? So the name is Willow. Which country discovered water molecules in lunar samples via Chang'e mission? The country is China. What is the capacity of Tata Power's floating solar project in Khandwa district? This is 126 megawatt. What is the name of India's multi-role stealth guided missile frigate commissioned in Russia? This is INS Edusheel. ठीक है. Now let us start with the इकोनॉमी वाला सेक्शन. अब हम करते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन के क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट विद द इकोनॉमी पोर्शन के हमारे एमसीक्यूज. नाउ द फर्स्ट वन इज, इंडिया सरपास जापान इन 2025 टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. एब्सोल्युटली करेक्ट. India's nominal GDP in the financial year 2026 is projected at $5.58 trillion. Okay, so this $5.58 trillion is projected by the year 2028, not 2026. Okay, so only the first statement is true. Now, FDI into India's services sector increased by over 40% in FY 2024-25. Now, Singapore accounted for the highest FDI share, followed by Mauritius and USA. So, both the statement here is correct. Singapore is the largest recipient FDI. Singapore is the largest country जहाँ से FDI आती है. Then there is USA and then there is Mauritius. Maharashtra attracted the lowest share of FDI inflows in financial year 2024. No. If FDI is talked about, Maharashtra invites the highest FDI inflows. ठीक है. Second is, India's manufacturing FDI rose by 18% compared to the previous fiscal. So the second statement is true. First statement हमारा wrong है. Next is, India's ranked 39th in the Global Innovation Index of 2024. Absolutely correct. India's ranked 39th in the Global Gender Gap Index. So नहीं, 39th नहीं है, 131st रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का. नेक्स्ट इज, in the World Press Freedom Index of 2025, India ranked 85th among the 195 countries. Singapore topped the Endless Passport Index 2025 with 195 visa-free destinations. So only the second statement is true. Singapore जो है वो टॉप पे है. Talking about India, India ने रैंक किया है 151st in the Press Freedom Index. The unemployment rate in India during April 2025 stood at 5.1%. Correct है. PLFS, that is Periodic Labor Force Survey data, is released on a weekly basis for rural and urban areas. No, it is not released on weekly but on monthly basis. ये monthly basis पे issue होता है. So यहाँ पे only हमारा first statement is true because this PLFS data is released monthly. नेक्स्ट है, द बर्थ रेट इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम 36.9 to 19.1. एब्सोल्युटली करेक्ट. इन 2022 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट बर्थ रेट एट 26.9%. सो दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि हाईएस्ट बर्थ रेट जो रिकॉर्ड हुआ है वो बिहार में हुआ है, नॉट अंडमान. सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. डेथ रेट इन इंडिया ड्रॉप्ड टू 6.8% in 2022 from 14.9% in 1971. Second है, in 2022 चंडीगढ़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेथ रेट ऑफ 9.0. सो यहाँ पे ओनली हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज चंडीगढ़ का हाईएस्ट डेथ रेट है दैट इज़ 9.0, लोएस्ट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज, India's infant mortality rate dropped from 129 in 1971 to 26 in 2022. Absolutely correct. Now,
In 2022, Madhya Pradesh reported the lowest infant mortality rate in the country. ये डेटा गलत है बिकॉज MP रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द मिनिमम, अगर मैं मिनिमम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो ये मणिपुर में रिकॉर्ड किया. दैट इज़ वाई ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज maternal mortality ratio in India reduced to 88 in 2020 to 2022. Correct है. Kerala and Tamil Nadu had MMRs below the SDG target. So दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे correct है. Now next news is regarding the amalgamation of the regional rural banks. The 2025 amalgamation of RRB followed the principle of one district one bank. Absolutely correct. Next is the process was carried out under the powers granted by the RRB Act of 1976. Now only the second statement is true because जो एम था वो था, प्रिंसिपल था वन स्टेट वन RRB. ठीक है, यहाँ पे है वन डिस्ट्रिक्ट वन बैंक, ये गलत है. वन स्टेट वन RRB was the aim. Regional rural bank were established in 1975 based on Narsimham working group recommendations. Absolutely correct. Phase 4 of the amalgamation in 2025 consolidated 43 RRBs into 26. ठीक है. Now second statement हमारा incorrect है because 26 RRBs जो है वो consolidated हुए थे, RRB का reduction नहीं हुआ है. ये 26 RRB consolidate हुए हैं अंडर दी वन स्टेट वन RRB प्लान. ठीक है, RRB का मर्जर नहीं हुआ है. सो दैट इज वाई सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मूंग सॉ द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द MSP अमंग द खरीफ क्रॉप फॉर 2025-26. इनकरेक्ट है. मूंग में जो था वो लोएस्ट इंक्रीज था. नेक्स्ट इज द MSP फॉर मूंग इंक्रीज फ्रॉम 8682 टू 8768 पर क्विंटल. तो ये बिल्कुल सही है. द रेट्स हैव बिन करेक्ट, बट अगर मैं बात करूं मिनिमम इंक्रीज तो वो मूंग में हुआ है, नॉट ना कि हाईएस्ट. रागी है द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन MSP फॉर द खरीफ सीजन. जवार MSP रोज फ्रॉम इतना विच इज़ अ हाइक ऑफ 9.73%. सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है. हाईएस्ट MSP की अगर मैं बात करूं तो अब आपको समझ में आ गया है, इट इज़ गिवन टू रागी. एंड अगर मैं लोएस्ट MSP की बात करूं तो लोएस्ट MSP हमारी मूंग पे है. ठीक है. एंड विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोक्योर ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑल दी क्रॉप्स एट MSP, ये हमारा हरियाणा है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडियाज रैंक सेकेंड इन द ग्लोबली इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड फर्स्ट इन द एग प्रोडक्शन. बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक हमारा फर्स्ट है एंड एग के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकेंड है. ठीक है. नाउ वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन. एब्सोल्युटली करेक्ट. ओनली द सेकंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं. पंजाब एट द हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ इन वुल प्रोडक्शन वाइल राजस्थान लेड इन टोटल आउटपुट. बिल्कुल करेक्ट है. लद्दाख कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट टोटल एग आउटपुट. नो, लद्दाख में हाईएस्ट ग्रोथ वॉज सीन. हाईएस्ट ग्रोथ वॉज सीन इन लद्दाख बट टोटल एग आउटपुट में हाईएस्ट नहीं था लद्दाख. ठीक है. दैट इज वाई ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू. इंडिया रैंक्ड अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स. इंडिया वॉज रैंक 7th इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एंड 8th इन द एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट. सो यहाँ पे ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इंडिया का जो रैंक था वो 18th था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, नॉट टॉप 5 में इंडिया नहीं था. ठीक है, टॉप 5 में इंडिया नहीं था. नेक्स्ट इज इंडिया रैंक 4th इन द ग्लोबल माइनिंग प्रोडक्ट इंपोर्ट्स एंड 6th इन आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स. करेक्ट है. इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3rd इन द लाइम प्रोडक्शन ग्लोबली. बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं. सी हमारा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द ग्लोबल FDI इनफ्लोज इन 2023 इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू 2022. नो, गलत है क्योंकि FDI जो इनफ्लोज हैं इन 2023 ये 2% से डिक्रीज़ किए हैं, ना कि इंक्रीज़. सो ये जो ट्रेंड्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे ये पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को.
India dropped to 15th position in the FDI inflows in 2023, down from 8th in 2022. So second statement हमारा सही है, first one is wrong. The theme of the World Investment Report 2024 was classified investment facilitation and digital government. Now, India is ranked among the top 5 economies in FDI outflows globally in 2023. So, only the first statement is true क्योंकि इंडिया का जो रैंक था वो 20th था FDI outflows में. ठीक है. Next is, where was the India's largest automobile Gati Shakti multimodal cargo terminal inaugurated? So, it is in Manesar, which is in हरियाणा. When was the India UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन? ये साइन हुआ था May 6, 2025 को. अंडर द FTA what percentage of UK tariff lines will receive duty free access from day one? तो 99% इसका नंबर है. हाउ मेनी पीपल डिड इंडिया लिफ्ट आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो 171 मिलियन लोगों को इंडिया ने आउट ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे पुल किया है. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लोकेटेड? सो दिस इज इन विजिंगम, केरला. हु डेवलप द विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट? सो इट इज डेवलप्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन. How many national center of excellence were announced for skilling in 2025? So 5 centers have been announced. The semiconductor unit approved in Uttar Pradesh is a joint venture between the HCL and Foxconn. Next, what is the minimum service required to receive a 50% pension under the UPS scheme? So 25 years का minimum service चाहिए. What percentage of basic salary plus dearness allowance does the government contribute to the unified pension scheme? So 18.5% is contributed by the government. Which state was the first to adopt the unified pension scheme for its employees? So ये है हमारा महाराष्ट्र. Next is India's rank in 2025 Sustainable Development Goal Index is 99th, and this is for the first time India top 100 में आया है. Which country has secured the top position in the SDG index? So this is Finland. What is the topmost performance category in the Panchayat Advancement Index? So the topmost category is Achievers. How many Gram Panchayats were classified as front runners in the first PAI, that is Panchayat Advancement Index? So 699 को front runners यहाँ पे माना था. Which two states had the highest number of front runner Gram Panchayats? So this is state of Gujarat and Telangana. Which institution won the Digital Payments Award 2024-25 by the Ministry of Finance? So it has been won by India's Post Payment Bank. Who presented the Digital Payments Award to the IPPB? So it is presented by Nirmala Sitharaman and Pankaj Chaudhary. Which portal was launched under the Digital PDS Reform Scheme in May 2025? So this is Depot Darpan. How many DPSUs were granted Mini Ratna Category 1 status in 2025? So total number है 3. The Shakti policy relates to which transparent allocation of resources? So Shakti policy is related to the redistribution or effective allocation of coal. Important है ये policy, याद रखना. Shakti policy is related to coal. When was the Prime Minister Internship Scheme launched? So it was launched on October 3, 2024. What is the monthly stipend provided under the PM Internship Scheme? 5000 का monthly stipend यहाँ पे provide किया जाता है. Next is, what was the theme of NSO's forward-looking survey on CAPEX launched in April 2025? So this is 3-year trends and future outlook. India's rank in the Economic Freedom of the World report is 84th. Next is, which country became India's largest trading partner in financial year 2023? So this was China. अभी recently फिर से USA is the largest trading partner. Where was the world first hydrogen summit held? It was held in Rotterdam. In which northeastern states was the Swalambini scheme launched? So ये scheme launch हुई थी हमारे असम, मेघालय and मिजोरम में. Next is, what is the primary objective of the Swalambini scheme? So the objective is to empower women in higher education institutions. Important scheme है, याद रखना इसको. What does the Bharat interface for money
offers to the enhanced user experience. So it provides multi-language support for 15 plus Indian languages. Next is, according to Niti Aayog's 2025 report, what share does the automotive sector contribute to the India's manufacturing GDP? So the share is 49%. What is India's rank in global automobile production? फोर्थ रैंक है. स्मार्टफोन की मैं बात करूं, स्मार्टफोन प्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो इंडिया का यहाँ पे सेकंड रैंक है. What decision was taken regarding medium and long term gold monetization scheme in 2025? सी ये है, it has been discontinued. Value of India's total export in 2023-24, important है. Value of total export was $778.21 billion. Which country was India's top export destination in 2023-24? So USA was top export destination. Which company developed India's first hydrogen transportational pipes? So it has been developed by Tata Steel. How many watershed development projects were approved under the PM Kisan Samriddhi Yojana? This is 56. Which state received the highest tax devolution allocation in January 2025? So उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला है. Next is, the Pandit Deen Dayal Upadhyay DDU multi-tracking projects cover which district? So this covered the districts of Varanasi and Chandauli. Which festival promotes India's hand-woven sarees under the theme My Sari, My Pride? So this is Virasat. Which company joined the International Copper Association in October 2024? So Hindalco ने अभी recently join किया. Next is, which company surpassed Apple in market value in October 2025? So this is Nvidia, and this is currently the largest company of the world. What AI powered tool did RBI launch to tackle digital fraud? That is mulehunter.ai. very important news है, इसको ध्यान रखना. What does the PM E-Drive scheme stands for? So this stands for Pradhan Mantri Electric Drive Resolution in Innovative Vehicle Enhancement Scheme. According to the Global Skill Report 2024, what was India's global rank? So Global Skill Report में इंडिया का रैंक था 87th. Which state topped the India State Skill Ranking in 2024? So पंजाब ने टॉप किया है. So with this we are done with the both Science and Tech plus Economy के Current Affairs in the MCQ format. वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग.